Hello everyone. Today is 12th September 2025. Let's discuss the UPSC relevant news from the Hindu. Okay, so let's start. The first news is India Mauritius partnership, health and science cooperation. You can quote in the answer that health diplomacy builds bridges stronger than trade. Health diplomacy builds bridges stronger than trade. बेसिकली मॉरिशियस के साथ इंडिया के टाइज डायस्पोरा डिफेंस और हेल्थ पे बेस होते हैं। मॉरिशियस को इंडियन ओशियन में लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना। लिटिल इंडिया किसे कहा जाता है? मॉरिशियस। अभी इंडिया का मॉरिशियस के साथ एमओयू साइन हुए हैं इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन हेल्थ इंफ्रा, मेडिकल एजुकेशन एंड एआई बायोटेक कोलैबोरेशन। एआई बायोटेक collaboration. ओके, एंड एक और चीज प्रीलिम्स ट्रैप विच यू नीड टू रिमेंबर, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स आर एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट्स एंड जो ट्रीटीज होती हैं दे नीड पार्लियामेंट रेटिफिकेशन, नीड पार्लियामेंट ratification. Got it? Some mains enrichment material you can quote in the answer that according to WHO, global health partnership, global health partnership reduce inequities. You can also quote a case study. India, India, Africa, E-Vidya Bharati, E-Vidya Bharati, and Arogya Bharati project. And PM Modi said, India's pharmacy of the world is also a partner in health security. India's pharmacy of the world is also a partner in health security. So you can quote this in your mains answer, and you can also quote that medicine is not just cure, it is also diplomacy. Medicine is not just cure, it is also diplomacy. Got it? So this is what is written here. India and Mauritius have signed comprehensive memorandum of understanding focusing on health infrastructure development through the Ministry of Health and Family Welfare. The agreement encompasses medical education enhancement and cutting edge science and technology collaboration, particularly in artificial intelligence and biotechnology sector. Health infrastructure, ministry backed development programs, medical education, capacity building initiatives, AI and biotech, technology collaboration framework, UPSC trap alert, bilateral memorandum of understanding are not treaties requiring parliamentary ratification. Health infrastructure and workforce skilling are frequent previous year question themes. Got it? And the next news is maritime cooperation, hydrography, and EEZ mapping. You can quote in the answer that who controls the map controls the sea. Who controls the map controls the sea.
EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक होता है? 200 नॉटिकल माइल्स तक। और इसमें रिसोर्सेज का जो ओनरशिप होता है वो किसका होता है? कोस्टल स्टेट का होता है। अभी न्यूज़ क्या है? इंडिया एंड मॉरिशियस हैव एस्टेब्लिश्ड अ रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर हाइड्रोग्राफिक कोऑपरेशन एम्फसाइजिंग exclusive economic zone mapping and maritime domain awareness enhancement. Got it? So कुछ prelim steps which you need to remember. Territorial water, that is till 12 nautical miles. EEZ till 200 nautical miles. And UNCLOS framework क्या है? 1982 framework. And India party कब से है? India party since 1995 जब WTO का फॉर्मेशन हुआ था, मतलब जस्ट याद करने के लिए। ठीक है, इंडिया की मैपिंग हेल्प करती है किसे? मॉरिशियस को इन ब्लू इकोनॉमी ग्रोथ में। एंड यू कैन कोट हियर दैट इंडियन ओशियन इज द वर्ल्ड्स एनर्जी हाईवे। ओके, एंड ऑल्सो मैपिंग सीज टुडे मीन्स मैनेजिंग resources tomorrow. Hydrographic cooperation, that is scientific measurement and description of seas for safe navigation and optimal resource utilization. EEZ mapping focus comprehensive mapping of the 200 nautical miles exclusive economic zone for resource management. Maritime domain awareness, enhanced security and monitoring capabilities across territorial waters, that is till 12 nautical miles. Critical distinction: EEZ extends 200 nautical miles, not 12 nautical miles, which defines territorial waters. This is the common UPSC trap questions which you need to remember. Next question is AYUSH wellness, diplomacy and affordable health. You can quote in answer that yoga mats can be as powerful as warships. As worship. AYUSH, that is Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, होम्योपैथी। इंडिया का क्या बन गया? सॉफ्ट पावर टूल। ओके, अभी न्यूज़ क्या है? इंडिया इज एस्टेब्लिशिंग एन आयुष वेलनेस सेंटर इन मॉरिशियस प्रमोटिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम इंक्लूडिंग आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी एज पार्ट ऑफ इट्स सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। ओके, जन औषधि केंद्र जन औषधि केंद्र कहाँ पे खोलने हैं? अब्रॉड में। एंड एक चीज और याद रखना कि आयुष के लिए हमारे पास एक सेपरेट मिनिस्ट्री है, नॉट अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री। ओके, सेपरेट मिनिस्ट्री। जन औषधि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है हमारे को? अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे है हमारा? इज इन जामनगर, इंडिया, दैट इज गुजरात। ओके, एंड 100+ कंट्रीज ने क्या किया? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को अडॉप्ट किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा अडॉप्ट किया है। एंड यू कैन कोट इन द आंसर दैट UNGA रेजोल्यूशन 2014, इसमें कोट दिया गया था कि योगा इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। योगा इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। ओके, एंड ऑल्सो वेलनेस इज इंडियाज
India's new weapon of diplomacy. Okay, so you can quote all of this in the answer. Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Kendras discussions are underway for opening government-backed generic medicine outlets overseas, making affordable drugs accessible to Indian diaspora communities. AYUSH operate as a union ministry and wellness diplomacy represent a crucial component of India's soft power strategy globally. Next news is Samudra Pradakshina all women naval expedition. Waves do not ask waves do not ask gender before testing courage. ओके 2017 नाविका सागर नाविका सागर was India's first all woman circumnavigation. ओके नेवी ने अनाउंस किया नया ऑल वुमेन ग्लोबल सेलिंग एक्सपीडिशन. ओके सर्कम नेविगेशन का मतलब होता है कि अक्रॉस ऑल लॉन्गिट्यूड क्रॉस ऑल longitudes all oceans. इंडिया का नारी शक्ति पुश इन फोर्स. यू कैन कोट इन द आंसर इंडिया नारी शक्ति पुश इन फोर्सेस. ओके जिसमें आप लिख सकते हो परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन ऑफिसर परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन ऑफिसर 2020 and also quote empowering women is empowering half the nation is empowering half the nation's strength. Okay, so this is what is written here. Preparation phase, comprehensive training and equipment readiness for the challenging maritime journey, global circumnavigation, sailing around the earth via major ocean, showcasing Indian naval capabilities, women empowerment, continuing the tradition of women officers leading maritime expeditions. Airport modernization, FTI and TTP pilot programs. You can quote in the answer. Borders must be secure but also seamless. लॉन्ग क्यूज और सिक्योरिटी डिलेस ट्रैवल को क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं. अभी न्यूज़ क्या है. इंडिया हैज़ लॉन्च्ड पायलट प्रोग्राम्स फॉर फास्ट ट्रैकिंग इमिग्रेशन एंड ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम्स टू इन्हांस इंटरनेशनल ट्रैवल एफिशिएंसी वाइल मेंटेनिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स. ओके टीटीपी इज नॉट इक्वल टू कि हम कोई वीज़ा वेवर दे रहे हैं. ओके इट इज़ नॉट वीज़ा वेवर कि वीज़ा में कोई छूट दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, इट इज़ बेसिकली वेटेड फैसिलिटेशन. फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन इज एक्सपीडिटेड बॉर्डर कंट्रोल प्रोसेसिंग फॉर एलिजिबल ट्रैवलर्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सिक्योरिटी. ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम रिस्क बेस्ड facilitation system requiring thorough vetting and background verification. Risk based screening. Security checks calibrated according to individual traveler risk profiles. FTI does not constitute a visa waiver program. TTP involve risk based facilitation but still require comprehensive vetting. It is not free entry. You can quote in the answer ICAO that airports
Airports are gateways of a nation's development. Okay. And the next news is Supreme Court एंड स्पोर्ट्स पॉलिसी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट पीआईएल. एक पीआईएल फाइल हुई थी कि इंडिया पाकिस्तान के मैच को रोका जाए. ठीक है. एंड यू कैन कोट इन द आंसर. कोर्ट्स कैन नॉट बैट इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेसी. बैट इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेसी. ठीक है. जुडिशियल रिस्ट्रेंट in the sports administration. Supreme Court declined urgent listing of a PIL seeking to prevent the India-Pakistan cricket match, directing the registry to process the petition according to established norms. Administrative powers, that is listing and roster management, falls under the Chief Justice of India's administrative jurisdiction. तो ये prelims का most important question है. That is listing and roster management falls under the Chief Justice of India's administrative jurisdiction. Judicial philosophy. Courts typically avoid micromanaging sports policy decisions, maintaining separation of powers. PAL framework. Public interest litigation allow petition for broader public interest with relaxed locus standi requirements. Okay. सेपरेशन ऑफ पावर किसमें एस्टेब्लिश किया गया था? हमारा केशव नंदा भारती केस 1973. And you can quote in the answer that judicial restraint is also judicial wisdom. Judicial restraint is also judicial wisdom. Okay. And the next news is AI misuse and celebrity rights. Delhi High Court intervention. You can quote in the answer. When technology faces, law must unmask it. When technology faces, law must unmask it. Deepfake बेसिकली क्या होते हैं? हमारे AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फोर्ज वीडियोस. ओके. बेस्ड फोर्ज वीडियोस. इससे क्या होता है कि रेपुटेशनल प्लस लीगल हार्म. अभी न्यूज क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्टेड गूगल एंड एक्स, दैट इज फॉर्मली ट्विटर, टू ब्लॉक AI जनरेटेड कंटेंट falsely depicting actor Aishwarya Rai, addressing growing concern about deepfake technology and celebrity impersonation. Okay. Some important things which you need to remember. Legal framework, that is personality and privacy rights are actionable through tort law and IT rules even without specific image right legislation. Okay. Personality and privacy rights are actionable through tort law and IT rules even without specific image rights legislation. Deepfake definition: synthetic media technology that convincingly swap or forge identities, creating realistic but fabricated audio-visual content. ठीक है. हमें एक कोटेशन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी विदाउट अकाउंटेबिलिटी is tyranny. एंड एक केस याद रखना, पुट्टा स्वामी केस 2017, जिसमें बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट. ओके. एंड द नेक्स्ट न्यूज इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, NRI postal ballot proposal. You can quote, democracy must travel where citizen
citizens travel. ओके, अभी क्या होता है कि एनआरआईज प्रॉक्सी वोट कर सकते हैं, पोस्टल बैलेट एब्सेंट है। प्रॉक्सी वोट कर सकते हैं बट नॉट पोस्टल बैलेट। केरला का जो सीईओ है, केरला सीईओ, Kerala Chief Electoral Officer has urged the Election Commission of India to permit postal ballot for overseas electorals in upcoming assembly polls, potentially revolutionizing NRI voting participation. Okay, overseas electorals कौन होते हैं? Indian citizens abroad with Indian address. Okay, that is overseas elector. याद रखना, they are Indian citizen abroad with Indian एड्रेस। लॉ कमीशन की रिपोर्ट को याद रखना, लॉ कमीशन 2015 रिपोर्ट, 2015 रिपोर्ट, दैट इज अलाउ रिमोट वोटिंग फॉर NRIs. Okay, and you can also quote ballot must follow the citizen, not the border. Okay, so this is what is written here. Current system, limited proxy voting, provision for NRIs, proposed reforms, postal ballot expansion under the active consideration, enhanced participation, greater democratic inclusion for overseas citizens. Overseas elector definition: an Indian citizen registered at an Indian address but currently residing abroad, eligible for voting right in Indian elections. Next news is Andhra Pradesh solar integration at thermal plants. You can quote old coal plants can also shine with solar. Keyword hybridization reduces emissions and cost. Okay, अभी न्यूज क्या है? Andhra Pradesh has developed a detailed project report for installing solar capacity at Shri Damodram Sanjeeva thermal power plant station with similar plan for Rayalaseema thermal power plants to meet auxiliary consumption requirements. ओके, तो इसमें क्या होगा? SDSTPS सोलर प्रोजेक्ट प्राइमरी इंस्टॉलेशन एट श्री दामोदरम संजीवा थर्मल पावर स्टेशन रायलसीमा TPP secondary installation planned for auxiliary power consumption, auxiliary operations in-house plant operation including pumps and coal handling systems. Okay, DPR याद रखना, that is detailed project report, serves as a comprehensive techno-economic feasibility document for infrastructure projects. You can quote in the answer IEA report, that is hybrid models reduce CO2 intensity 20 to 25%. Okay, and India's 500 gigawatt non-fossil target by 2030. Also, energy transition works best when old meets new. Next news is Tele-MANAS National Mental Health Helpline. You can quote in the answer mental health
needs a number you can dial at 2 AM. लॉन्च हुआ था ये 2022 में 4/24/7 मेंटल हेल्थ सपोर्ट। अभी न्यूज़ क्या है? केस स्टडी डेमोन्स्ट्रेट टेली-मानस improving mental health outcome across India, though challenges remains in workforce availability and system integration. Okay, Tele-MANAS basically mental health assistance and networking across states। ठीक है, WHO की हम यहाँ पे रिकमेंडेशंस लिख सकते हैं कि इंडिया हैज़ 0.75 साइकेट्रिस्ट पर लाख। रिकमेंडेड कितने हैं वर्सेस 3 कितने हैं रिकमेंडेड, और हैं कितने हमारे यहाँ पे 0.75। एक इनिशिएटिव था मनोदर्पण जो लॉन्च हुआ था कब? ड्यूरिंग कोविड। ठीक है, ये भी हम आंसर में कोट कर सकते हैं। ठीक है, और आप आंसर में एक चीज़ और लिख सकते हो, हेल्पलाइन इज होप मेड ऑडिबल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट टेलीमानस। कॉम्प्लीमेंट करता है किसे? स्टेट एंड एनजीओ हेल्पलाइन, बट डज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर क्लिनिकल मेंटल हेल्थ केयर। वर्कफोर्स shortage and system linking remain key challenges. Next is Immigration and Foreigners Exemption Order 2025. You can quote in the answer that exemptions don't mean citizenship. Exemption don't mean citizenship. Migrant रिफ्यूजी पॉलिसीज क्या होती हैं? वो वेरी करती हैं। इंडिया की जो है, इंडिया इज नॉन सिग्नेटरी टू 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, ये याद रखना। इंडिया इज नॉन सिग्नेटरी टू 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन। ओके, एंड करंट न्यूज इज the 2025 order provides exemption from regular passport and visa requirement for specified groups including Nepal and Bhutan nationals, Tibetan refugee, certain minorities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, plus Sri Lankan Tamils under specific conditions. Nepal and Bhutan nationals, traditional exemptions maintained for neighboring country citizens. Tibetan refugee, special provision for displaced Tibetan communities members. Religious minorities, specific minorities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. Sri Lankan Tamils, protection from forcible repatriations and conditional safeguards. Critical limitation, the order does not automatically confer citizenship. Illegal migrants classification remains a significant hurdle for naturalization and long-term visa eligibility. ओके, ये एक चीज याद रखना कि exemptions is relief, not right. Okay, exemption is relief, not rights, not rights. And the next news is Bihar electoral reforms, SAR and Aadhaar integration. Purity of roles means credibility of polls. सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? मॉनिटर बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ओके, अभी क्या हुआ है? फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट directions, the election commission instructed Bihar chief election officer to include Aadhaar as the 12th indicative document for special intensive revision addressing voter roll discrepancies. Okay,
एक चीज याद रखना, आधार इज अ आइडेंटिटी प्रूफ नॉट सिटीजनशिप प्रूफ। आर्टिकल 326 हमें याद रखना, दैट इज फॉर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आरपीए 9050 के अंदर क्या होता है, रोल ऑफ ईआरओ। ओके, ईआरओ का रोल किसके अंदर होता है, आरपीए 9050। सर इम्प्लीमेंटेशन टारगेटेड water roll cleanup and inclusive drive, Aadhaar integration, additional verification document for electoral processes, missing name resolution, addressing voter registration gaps systematically, ground level challenges, limited booth level agent and booth level officer capacity combined with objection limits create practical difficulties in implementing correction, anxiety persists over vote chori messaging impact। ओके, यूपीएससी ट्रैप याद रखना कि आधार सर्व एज इंडिकेटिव वेरिफिकेशन नॉट सोल प्रूफ सिटीजनशिप। द इलेक्शन कमीशन कैप्स ऑब्जेक्शन पर बीएलए, that is booth level agent booth, a process design detail frequently examined। Okay, so it was all about Bihar, sir. I have already discussed it in detail in 2nd September video, you can watch that। Okay, and one more thing, you can quote, I remember, without credible roles, without credible roles, without credible roles, elections lose credibility, elections lose credibility। Okay, and the next news is Europe LNG pivot to USA, energy route, energy routes often redraw political maps। क्या हो रहा है कि यूरोप रशिया से एनर्जी कट कर रहा है, ठीक है, यूरोप रशिया से क्या कर रहा है, एनर्जी कट कर रहा है। अभी क्या हो रहा है कि स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप डेवलपमेंट्स हो रही हैं कुछ। इटली हैज स्ट्रेंथन एनर्जी कोऑपरेशन विद यूएस थ्रू द एडिसन शेल एलएनजी एग्रीमेंट। ये याद रखना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एडिसन शेल एलएनजी एग्रीमेंट इटली और यूएस के बीच, सिक्योरिंग अप्रोक्सीमेटली 0.7 million tons per annum from 2028 for up to 15 years, though some Europe Union state express resistance to this pivot। Current agreement addition Shell partnership finalized for long-term LNG supply. Supply timeline 0.7 million tons per annum delivery commencing 2028 for 15 years duration। EU resistance, some member states oppose increased American energy dependence, strategic implication, energy security versus price volatility, trade-off consideration, LNG, that is liquefied natural gas cooled to liquid state for efficient transport and storage, enabling global energy trade flexibility. Key insight: LNG contracts typically involve long term commitment, balancing energy security benefits against potential price volatility risk in global markets। ओके, एक चीज और याद रखना, ईयू का ग्रीन डील टारगेट कब तक के हैं, ईयू ग्रीन डील टारगेट इज टिल 2050। ओके, एंड इंडिया से कंपैरिजन कर सकते हो, इंडिया बेसिकली 50% एलएनजी इंपोर्ट कहाँ से करता है, इंपोर्ट फ्रॉम कतर। ओके, एंड यू कैन कोट इन द आंसर that pipelines tie politics tighter than treaties। Okay, so this was all about today news. Thanks for watching, see you in next video, bye bye।